Hey everyone, welcome to a brand new video of our series Motorcycle Throttle. This video, we review this fantastic scooter from TVS called the Ntorq 125 Race Edition. तो चलिए रिव्यू करते हैं इस फैंटास्टिक स्कूटर का. Manufactured by TVS Motor Company, the Ntorq 125 Race Edition, one of the most popular scooters in the Indian automobile market. With its increased performance and practical features, the TVS Ntorq has strong appeal among the young population. So let's start the review और बताते हैं आपको इस स्कूटर के बारे में. तो सबसे पहले let's talk about the design first. Now at first glance हमने नोटिस किया design wise the TVS Ntorq 125 edition retains the same body framework of the standard Ntorq edition. It follows the same exact stealth aircraft inspired design philosophy जो एक normal edition में है, लेकिन जहां वो नॉर्मल एडिशन से डिफर करता है वो है इसका एक स्पोर्टी लुकिंग एलईडी हेडलैम्प स्ट्रक्चर जो ऑफर करता है ब्रॉडर और इल्यूमिनेटिंग बीम. इसके अलावा जो रेस एडिशन को डिफरेंट बनाता है स्टैंडर्ड एडिशन से वो है इसकी टू टोन कलर स्कीम एंड फैंटास्टिक रेस ग्राफिक्स ऑन द साइड. ये दोनों स्कूटर को एक डिफरेंट किस्म की रेसिंग लुक देते हैं जो कि स्टैंडर्ड एडिशन से काफी डिफरेंट और स्पोर्टी है. TVS Ntorq is equipped with signature T-shaped rear headlamps emitting stronger beams when required. The Ntorq 125 Race Edition also has machine pillion footrest with unique patterns. The scooter also gets a sporty split grab rail and a unique 3D Ntorq logo at the back जो इसको stand out करता है standard edition से. Overall, the looks are inspired by the Italian way of design जो इसको बनाता है एक एरोडायनामिक स्पोर्टी लुकिंग स्मार्ट स्कूटर. डिजाइन वाइज हम इसको रेट करते हैं 4.1 out of 5. Now after the design, let's talk about the specs and the performance of the scooter. Now in terms of specs, ये स्कूटर पावर्ड है एक एयर कूल्ड 3 valve सिंगल सिलेंडर BS6 कंप्लायंट इंजन से. ये एक फ्यूल इंजेक्टेड इंजन है with a power capacity of 125 cc that offers a maximum torque of 10.5 Nm at 5500 RPM. The TVS Ntorq Race Edition has an automatic charged motion variable time ignition which is called the CVTi technology developed by the TVS Motor Company. The CVTi tech transforms the air-fuel mixture in the engine into a combination of swirl and tumbles motion जो allow करता है एक smooth performance. The scooter has two modes, power and eco mode. Now, while riding on eco mode, the engine delivers better fuel efficiency, whereas on the power mode, there is more power delivered to the scooter. Furthermore, the scooter has an automatic centrifugal clutch, which makes the scooter pick up and ride simple and easy. तो चलो अब स्कूटर को ले जाते हैं एक राइड पर to check out the riding capability and performance of the scooter. As we sit on the scooter, the seat seems comfortable while the riding position looks upright and stable. Equipped with tall handlebars and a low 770 mm double-stitched high-theory seat, the TVS 125 Race Edition delivers optimum visibility and stance riding position to the riders. इसमें एक recessed front apron है जो provide करता है plenty of knee room for the riders. जब इसको आप ride करना start करते हो, you feel that the performance of the scooter is quite smooth and comfortable. ये scooter काफी lightweight और nimble है as it goes smoothly through the traffic. The scooter weighs in at a 118 kilogram curb weight और इस weight की वजह से ये स्कूटर ऑफर करता है a fantastic mileage of 51.54 kilometers in the city and a mileage of 56.23 kilometers on the highway. इसकी जो पूरी fuel tank capacity है that comes out to be 5.8 liters. And the suspension system in the scooter is decent and it does not compromise on ride quality as it offers a soft, supple feel during the ride on bumpy roads. The scooter has telescopic suspension with hydraulic dampers in the front and a non-adjustable coil spring monoshock suspension and hydraulic dampers at the rear. इसके tall handlebar do not cause any inconvenience for the knees while you take U-turns in the city. The TVS Ntorq 125 edition is equipped with synchronized braking system or the SBS system, 220 mm rotopetal front disc brake and a 130 mm rear disc braking system deliver करती है एक amazing performance during the city rides. इसमें TVS Remora bold और chunky tubeless tires हैं which offer firm grip around corners. इसके अलावा इसमें 100/80 12 inch diamond cut alloy wheels हैं which
gives steady handling and high speed stability to the scooter. Now despite many positive, the only negative feature जो हमें स्कूटर में मिलता है वो है इसका poor turning radius when compared to other scooters in the category. Except this, in terms of overall ride and performance, in this price range, the scooters is a fantastic option for most buyers. In performance and specs category, we rate it a 3.9 out of 5. अब finally हम बात करते हैं इस स्कूटर्स में दिए गए फीचर्स की. Now in terms of safety, इसमें एक patented easy center stand है which facilitates effortless parking experience for the rider. To enhance the safety further, there are hazard lamps and standard parking brakes which work fantastically well in the race edition. उसके अलावा in terms of the environment safety, इस स्कूटर में है एक new and improved BS6 catalytic converter जो कि इसको बनाता है BS6 compatible and जो करता है control the amount of pollution जो स्कूटर में से निकलता है. उसके अलावा टेक फीचर्स की बात करते हैं जिसमें आता है इसका एक डेटा लोडेड डिजिटल डिवाइस कंसोल विद ऑलमोस्ट 60 फीचर्स इनसाइड ऑफ इट. इस कंसोल में आपको बहुत सारे फीचर्स दिखते हैं जैसे स्पीड, फ्यूल लेवल, टॉप स्पीड रिकॉर्डर, ऑटो सिंक क्लॉक, एवरेज स्पीड, लैप टाइमर एंड हेलमेट रिमाइंडर. उसके अलावा इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है एंड इट हैज़ अ डेडिकेटेड TVS मोबाइल ऐप जिसमें राइडर्स देख सकते हैं इनकमिंग कॉल अलर्ट्स, इनकमिंग SMS अलर्ट्स, ऑटो रिप्लाई SMS, मिस्ड कॉल अलर्ट्स, फोन सिग्नल स्ट्रेंथ, लास्ट पार्क लोकेशन, व्हीकल स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्रामेबल नेविगेशन रूट्स. इन टेक फीचर्स के अलावा इसमें कुछ एडिशनल एक्सेसरीज और फीचर्स भी हैं जो इसको बनाते हैं एक फैंटास्टिक स्कूटर, जैसे कि इसमें है स्पेशियस स्टोरेज बिन, एक इंजन किल स्विच एंड ए USB चार्ज सॉकेट. तो ओवरऑल फीचर्स के मामले में हम इसको देते हैं 4.2 out of 5. Now the NTORQ 125 Race Edition है available in a 3-tone color scheme of matte black, metallic black and red. इसमें जो red and yellow color है that adds a vibrance to the scooter, while the black adds a touch of classiness to the overall design scheme. The price range of the scooter varies from 74,365 to 81,225 depending on the location. The TVS NTORQ 125 Race Edition with its performance edge and practical functions बनाता है quite an impression एक राइडर के ऊपर. If you are looking to test drive and want to check out the race edition of the TVS NTORQ 125, you can visit the showroom next to you, and if you happen to be in Delhi, you can visit OM Motors to check out and test drive the scooter on your own. तो यहाँ पे अपना वीडियो खत्म करते हैं. See you in the next one. Till then, it's goodbye and good day from us.